Okay, meanwhile, Yash, you get ready with your presentation, please. Can I start, sir? Just a second, please. Yes, sure. Yes, you may start, please. Thank you, sir. Good evening, everyone. My name is Yash Mandalia, and today the topic that I've selected is AS 13, that is Accounting Standards 13, which is accounting for investment. So investment can be bifurcated into two parts, which is current investment and long-term investment. So current investments is an investment that is by its nature readily realizable, and it is intended to be held not for more than a year from the date from which the investment was made. So basically, you invest in something and you do not hold it for the period for more than a year, and you sell that before the year gets completed or before 12 months or so. And long term is an investment other than a current investment. So long term basically means जब आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हो, अगर वो स्टॉक्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, किसी भी चीज में, तो वो आप 1 साल से ज्यादा तक होल्डिंग पीरियड रखते हो उसका, मतलब 1 साल से ज्यादा उसको होल्ड करके रखते हो, उसको बेचते नहीं हो. So current investments can be valued on cost or its realizable value, whichever is lower. Realizable value is the net amount of money that you will get after selling your investment, after deducting your brokerage, etc. So that's your realizable value. So long-term investments are always valued at cost, and long-term investments can only be valued at carrying cost when there is a non-temporary or permanent decline in the investment made by the company. So a non-temporary decline or permanent decline can be said as cash losses or losses in the market. So जब वो होता है तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट पे वैल्यू, उसका कैरिंग कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं उसको. तो सपोज आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. So suppose a non-listed entity in the market, there is a long-term investment is carried in the books at a cost of rupees 2 lakhs. The published accounts of the unlisted company received in May 2017 showed that company has incurred cash losses with the decline in market share, and the long-term investment may not fetch more than 20,000. So here the company has a non-temporary decline in the investment. So now जो लॉस हुआ है आपका, मतलब पहले आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख पे था, अभी उसका वैल्यू कैरिंग, अभी उसका करंट वैल्यू इज 20,000. सो 1,80,000 जो डिफरेंस होता है वो आपको P&L में राइट ऑफ करना पड़ता है. एंड द सेकंड पार्ट इज द कंपनी में वांट टू reclassify the investments as they might want to reclassify the long-term investments into current investments or the current investments into long-term investments. So if the company is reclassifying the long-term investments into current investments, so it can be valued at the cost, or if it is non-temporary or declining, it should be valued at its carrying cost. And the current investments, if they are being transferred, reclassified into long-term investments, they should be valued at their cost or their fair value, whichever is lower. Both of them, whichever is lower. Thank you, sir. Thank you, my dear friend. Thank you very much. May I call the next speaker, Dhruv? Are you ready, Dhruv? Yes, sir. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening, everyone. I am Dhruv Mandalia, and today I'll be talking about accounting for profit or losses in the pre or post incorporation period. So to give a basic introduction about this thing, when a non-incorporated entity is taken over, and if its incorporation is done at a later period, then the first financial year of this entity is divided into two parts: pre-incorporation and post-incorporation period. Now, as the name suggests, pre-incorporation period means the period which is before the date of incorporation, and post-incorporation period is the period which is after the date of incorporation. As per the Companies Act 2013, any profit which the entity earns during the pre-incorporation period is to be treated as capital profit, which is to be transferred to capital reserve account. And if in case there is a loss, it is to be transferred to goodwill account.
And for post incorporation period, it is the normal accounting treatment which we do. We transfer it to free reserves, revenue reserves. Whether it's profit or loss, the applicable treatment is the same. Now, for doing all of this, we require three things. That is gross profit, sales ratio, and time ratio. Gross profit is nothing to worry about. It is always given in the question. Sales ratio and time ratio needs a bit of calculation. So the easier of both of them is time ratio. Time ratio is nothing but the number of months in the pre-incorporation period as compared to post-incorporation period. So, for example, the incorporation of an entity is done on 1st of July. So the 3 months before 1st of July, that is April, May, and June, are considered as pre-incorporation period, and the remaining 9 months are obviously post-incorporation. Now the number 3 and 9 are compared, and the ratio which it develops is 1:3. So this ratio we call it time ratio. And the second is sales ratio. It is nothing but the amount of sale done in the. It is nothing but the comparison between the sales figure done in the pre-incorporation period and the post-incorporation period. So, for example, if in the pre-incorporation period sales is 50,000, and if in the post-incorporation period sales is 1 lakh, then the ratio is 1:2. So now where to use this ratio is the next question. So to arrive at pre-incorporation profit or loss and post-incorporation profit or loss, we need to segregate gross profit and all the expenses in the particular ratio in pre and post incorporation periods. So the gross profit will always be divided in the sales ratio in the pre and post incorporation periods. Now all the fixed expenses like salaries, rents, interest, depreciation, etc., will be bifurcated in time ratio, and all the sales related expenses like advertising, bad debts, commission, etc., will be always bifurcated in sales ratio. All the non-company expenses like salary to partner, commission to partner, interest on capital will always be posted in the pre-incorporation side and not the post-incorporation side. And all the company-related expenses like the managerial remuneration, directors' fees, preliminary expenses written off will always be transferred to the post-incorporation period. And obviously this is if nothing on the contrary is mentioned in the question. And or if nothing is mentioned in the question related to tax audit fees, it is to be treated as post-incorporation expense. And audit fees, the exception is only this much. And only the first balance sheet for the first financial year will be in the columnar form. That is the year in which the entity is getting incorporated, and for the subsequent years, it will be the normal Schedule 3 balance sheet and P&L statement that we prepare. Yeah, that's the major differentiation between pre and post incorporation period. Yeah, so that's it for this topic. Thank you, sir. Thank you very much, my dear friend. So now may I call the future Prime Minister? Yes, sir. Sure. BK Square, please go ahead. Good evening, sir. I am Bhavesh Kishore Khivsara. Today, I want to discuss the topic of audit risk of audit subject. सर ऑडिट रिस्क में दो फॉर्मूले आते हैं सर. पहला रोमम का और पूरे ऑडिट रिस्क का. सर रोमम का फॉर्मूला है इनहेरेंट रिस्क, इंट्रोल रिस्क. सर मैं ये पूरा एग्जांपल रोमम का पूरा कंसेप्ट एक स्टोरी के जरिए समझाना चाहता हूँ पूरे क्लास को. आप इमेजिन कीजिए कि जंगल में एक खुला शेर घूम रहा है, एक टाइगर खुला घूम रहा है. वो अभी खुला टाइगर है, कोई पिंजरे में बंद नहीं है. इसका मतलब वो जब चाहे जब किसी को खा सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, कोई दूसरे प्राणी को मार सकता है. एक खुला टाइगर किस प्रकार का होता है और कितना खूंखार हो सकता है और जानलेवा हो सकता है, ये हम कल्पना कर सकते हैं सर. ये एक बात हो गई. और दूसरी एक बात है, वो टाइगर घूम रहा था जंगल में, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग आके उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं. तो अभी टाइगर तो टाइगर ही है, उसकी जो इनहेरेंट क्वालिटी है कि लोग दूसरे प्राणियों को मार के खाना, वो तो उसकी अभी भी क्वालिटी है ही. लेकिन पिंजरे में होने की वजह से वो क्वालिटी अभी दबी हुई है, पिंजरे के अंदर दबी हुई है. वो अभी खुलकर जी नहीं सकता टाइगर. एक पिंजरे में कैद हुआ प्राणी, उस प्रकार उसकी जिंदगी है. लेकिन सर ऐसा बहुत बार केसेस मतलब ऐसे बहुत से चांस में हो चुका है कि टाइगर को ऐसे संभाल के तो रखा जाता है कैद में, लेकिन वो छूट के भाग जाता है, तो वापस उसका वो शुरू हो जाता है. तो सर ये स्टोरी आपको सभी को लग रहा होगा कि ऑडिट का रोमम का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ये स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ. तो अभी मैं करना चाहता हूँ सर, जो टाइगर मेरे स्टोरी में था
जो टाइगर की इनहेरेंट क्वालिटी थी कि दूसरे प्राणियों की हत्या करके खुद का भक्षण कर, ये है सर इनहेरेंट रिस्क। रोमम का जो फॉर्मूला है, रोमम इक्वल टू इनहेरेंट इनटू कंट्रोल रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क वो टाइगर है जो किसी को भी खा सकता सर। इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन देखा जाए तो उसकी प्योर डेफिनेशन है कि इट इज अ ससेप्टेबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन अकाउंट when there is a no internal control in the organization or in the account. I will repeat once again, sir. Inherent risk की definition ऐसी है कि it is a susceptibility of misstatement in account assuming that there is a no internal control. जैसे टाइगर की इनहेरेंट क्वालिटी थी कि लोगों को दूसरे प्राणियों को मारना, ये होगा इनहेरेंट रिस्क सर। और जैसे पिंजरा है तो पिंजरा जो है वो कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल के जैसा काम आता है। जैसे टाइगर को बंद कर देते हैं तो जो टाइगर की ओरिजिनल क्वालिटी वो दब जाती है, वैसे इनहेरेंट रिस्क जो है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो वो इनहेरेंट रिस्क कुछ अंश तक दब जाती है, लेकिन रिस्क एलिमिनेट नहीं होती है, रिस्क दब जाती है सर। वैसे ही मतलब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये दोनों को अगर मिला है, अभी अपन ने जो बात की वो इनहेरेंट रिस्क और इंटरनल कंट्रोल की बात की, लेकिन यहाँ पे रिस्क शब्द का उपयोग किया गया है। रिस्क शब्द का उपयोग अपने को इस संदर्भ में लेना है कि इनहेरेंट रिस्क मतलब जो उसे अपन ने उसकी ओरिजिनल क्वालिटी है वो वापस आने की कितनी संभावना है, और इंटरनल कंट्रोल लगाने के बावजूद भी अकाउंट्स में मिसस्टेटमेंट हो जाए, ऐसे इनहेरेंट रिस्क की वजह से अकाउंट्स में मिसस्टेटमेंट हो जाए उसकी कितनी संभावना है। ये दोनों के संभावना को अगर देखेंगे तो इससे हमें मिलेगा रोमम, मतलब रिस्क ऑफ स्टेटमेंट, ROMM, जिसे हम शॉर्ट में रोमम प्यार से रोमम कहते हैं। तो रोमम इंटरनल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। अपन ने बात की थी सर ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला है सर रोमम यानी इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। सर ये जो सर दो प्रकार की रोमम हो गया और एक डिटेक्शन रिस्क हो गया। तो रोमम जो है मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसटेक, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है कि उसे किस मतलब उसकी रिस्क ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, जबकि डिटेक्शन रिस्क जो है वो ऑडिटर के हाथ में है कि अगर समझो रोमम ज्यादा है तो उसको अपना एरिया ऑफ ऑडिटिंग ये बढ़ाना पड़ेगा, सैम्पलिंग बढ़ानी पड़ेगी। डिटेक्शन रिस्क ये ऑडिटर के हाथ में है, अगर रोमम ज्यादा होता है तो डिटेक्शन रिस्क कम होनी चाहिए यानी ऑडिट एरिया बढ़ जाना चाहिए। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रोमम को और डिटेक्शन रिस्क को तो हमें ऑडिट रिस्क मिलती है सर। ऑडिट रिस्क यानी कि मैं शॉर्ट में बता के एंड करना चाहता हूँ। ऑडिट रिस्क यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के है वो गलत रिप्रेजेंट मतलब गलत हो रहा है, उसमें मिस स्टेटमेंट है, लेकिन ऑडिटर गलती से आई विल कोट अगेन सर, गलती से फेयर उसका जो जजमेंट है ऑडिट रिपोर्ट में ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, स्टेटमेंट ऐसा बता देता है, इसे ऑडिट रिस्क कहते हैं सर। तो इन शॉर्ट सर ऑडिट रिस्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ रोमम यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। Okay, Prime Minister ji, very well explained. That was good from your side. थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you very much. और बातचीत करते हैं थोड़ा सा, सबकी प्रेजेंटेशन हो जाए and I'll have a word with you again. Okay, now may I call Gautami please? Are you there? Yes sir. Please go ahead. सर स्क्रीन दिखाई दे रही? नहीं अभी, हाँ अभी दिखाई दे रही। Please continue. So good evening everyone. My name is Gautami Gaikwad. So today's topic is from EIS, cloud computing. So in simple word, cloud computing means use of computing resources as a service through network which allow accessing data or information from anywhere at any time with the help of internet without worrying maintenance about software resources and hardware. So characteristic, elasticity. We can expand or reduce resources according to our requirement. Pay per use, that means we pay only when we use them. On demand, we use only we need them. They are not a permanent part of IT infrastructure. Multiple sharing means it can be shared with multiple users simultaneously. Resilience means server provider ensure that resources available without impacting service. Workload migration, this point is linked with resilience. That means service provider may migrate server when the event of failure happen.
Then advantage, it helps to reduce capital expenditure as there is no requirement to spend huge money on hardware, software, or licensing fee. Next, reduce spending on technological infrastructure, minimum maintenance, achieving economics of scale. As cloud computing helps to increase productivity, that helps to reduce cost per unit. And anywhere access, globalization, that means we just required internet connection and device to access it anywhere. Drawbacks, internet connection lost, security. As a security is a major concern, as entire working of data is depend on the cloud. Scalability, dependency, that means we depend on vendor and we have to face their restriction on availability of infrastructure. And in interoperability is also known as shifting problem. That means vendor may not cooperate with each others at the time of shifting. And types of cloud or cloud computing environment. So first one is private cloud. This type of cloud computing environment is within the boundaries of organization and it exclusively used for organization benefit. It also called as a internal or operative cloud. Advantage of private cloud is it provide high level security and privacy as it's controlled by organization. And disadvantage is they require huge capital investment and weak SLA, that is service level agreement. And there are some example of private cloud. And second one is public cloud. It is an infrastructure that is open to use by a general public. Public cloud are administrated by third party or vendor over internet. It also called as a provider cloud. Advantage of public cloud is it is at affordable cost, highly scalable, and there is no limit for number of users and no need to establish infrastructure. And disadvantage is it is less secure than private cloud. Third one is hybrid cloud. As its name suggests, it is a combination of private and public. As a vendor who have private cloud can form a partner with a public cloud and vice versa. And it is a complex as it involve more than one type of model. And third one is community cloud. It is a cloud infrastructure that for exclusively used by a specific community of consumer which share common concern. And it's suitable for organization which can't afford private cloud and can't rely on a public cloud. Advantage of such cloud is it allow collaboration and sharing responsibility. It provide better security than public cloud and low cost compared to private. Next is, Your time has ended. just a minute. This is last slide. So cloud computing service models, it is given by National Institution of Standard and Technology. So first one is infrastructure as a service. As its name indicates, it provides hardware, storage space, and processing power and network for a user to run their application and on virtual machines. And second one, platform as a service. These models provide user the ability to develop an application on platform. In traditional time, this application is on a license base, but nowadays it is on rental basis. Third one is software as a service. It provides use of application over internet hosted by a service provider. In traditional time, it is on a license basis, but nowadays it's on demand basis. That's it. Thank you. Thank you. Thank you very much. So may I call Mr. Harshit now? Yes, sir. Please go ahead. Sir, I want to request Shubhankar to share his screen for me. Yes, please. Yes. Shubhankar, please share your screen. Yeah, one second. Yes, sir. I want to clear something, sir. Yes, please tell me. Sir, my role is I am a teacher here. Yes. Okay. So
Yes, let's start, sir. Fine. Go Yes. ahead. Okay. Okay. So my topic is corporate level strategies. ये टॉपिक 2-3 बार पहले हो चुका है, तो ज्यादा बोर ना हो इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा बोर ना हो, तो कोई भी सोएगा नहीं, सो मेरे साथ सब रहेंगे. So let's start. Okay. Shom, please next slide. Okay, so our chapter number is 4, that's corporate level strategy. Okay, then there is types of corporate level strategy. Okay, sir, there is one student, my student, I called him a Pinku. He has very much questions, sir. जो बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते वो उसे आते हैं, तो मुझे कभी बीच में पूछ लेता है. तो सर आप कुछ प्रॉब्लम उससे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गो अहेड. ऐसा ऐसा यस पिंकू, क्या कहना चाहते हो? सर आप सीधा आगे चले गए, इसका कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज क्या होता है बता दीजिए. यस 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 आई अंडरस्टैंड. ओके सर पिंकू, पर बट मेरे पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था सर, इतना याद रहता तो आपसे थोड़ी पूछता. ओके लेट्स अंडरस्टैंड. ओके सो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज दैट स्ट्रेटजी where the most senior persons take decision about the organization. Like in corporate level, there are the CEO, chief executive officer, board of directors, or the senior executives, corporate staffs, which take the big decisions of the organization. तो बहुत सारे बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन देते, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस लेते. लाइक अगर हम एग्जांपल ले गोदरेज ऑर्गेनाइजेशन का, then the आदि गोदरेज will be the corporate level presenter. So next, okay, Piku, you understand? Yes, I understand it. Okay. So next we are move forward. The types of the strategy. First is stability strategy. Next is expansion strategy. Next is retrenchment strategy. Next is combination strategy. Please repeat it like stability, expansion, retrenchment, combination. Stability, expansion, retrenchment, combination. ओके द फर्स्ट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. ओके आपने सबने आपको बता दिया, सबने आपको पढ़ कर बता दिया, मैं सीधा बता देता हूँ कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी होती क्या है. एक ही बिजनेस होता है, सेम बिजनेस, सेम ब्रांचेस, सेम प्रोडक्ट, लेस रिस्क होता है, लेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मार्जिनल होता है, ज्यादा कुछ नहीं. एग्जांपल ले तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो ना एक्सपेंशन के बारे में सोचती नहीं, एक मैच्योरिटी स्टेज पे आती. देयर इज 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. उस मैच्योरिटी स्टेज मेंटेन करती है, अगर कोई डिक्लाइन होने लगा तो उस मैच्योरिटी स्टेज को मेंटेन करने के लिए वो डिसीजंस लेते, तो बहुत ज्यादा गिना था. नेक्स्ट स्ट्रेटजीज इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी. सो उसमें भी 4 टाइप्स होते हैं: इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर एंड एक्वाजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस. Okay, so first is intensification. Okay, there are also 3 types of the intensification: market penetration, market development, product development. Okay, the first is market penetration. Okay, so market penetration ऐसा होता है कि आपका बिजनेस एग्जिस्टिंग ही होता है, आप न्यू बिजनेस में एंटर नहीं करते, आपका प्रोडक्ट भी पुराना होता है, न्यू प्रोडक्ट भी नहीं लाते. इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके पॉकेट में होता है. सर हमारे पॉकेट में कुछ नहीं है. पिंकू लेट्स अंडरस्टैंड, आपके पॉकेट में आपका मोबाइल है, उसका एग्जांपल वही है स्मार्टफोन. ओके, जितनी जल्दी मूवीज रिलीज नहीं होती उससे ज्यादा स्मार्टफोन्स रिलीज हो जाते हैं विद न्यू फीचर. सो वी कैन टेक एट एग्जांपल ऑफ अ मार्केट पेनिट्रेशन. ओके, नेक्स्ट विल बी आवर मार्केट डेवलपमेंट. ओके, जब आप अपने बिजनेस को न्यू जगह लेके जाते हैं, जैसे अगर एप्पल यूएसए में था वो इंडिया में है, इट विल बी द एग्जांपल ऑफ द मार्केट डेवलपमेंट. आप अगर आप मार्केट चेंज करते हैं, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मार्केट डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. जब आप अपना प्रोडक्ट चेंज करते हो, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एप्पल. एप्पल का क्लॉथ सुना है सबने, उसकी कॉस्ट 2000. सर उतने में 2000 का जियो का फोन ले लूंगा. ओके पिंकू, लेट्स कंट्रोल योर इमोशन, लेट्स गो अहेड. ओके सो इट्स एप्पल क्लॉथ. लाइट आपने कीमत सुनी होगी, मेरे दोस्त को मैंने वही कहा तो उसने मुझे वही जवाब दिया कि मैं जियो का फोन ले लूंगा उसकी कीमत. यस, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. लाइक द एप्पल हैज मेनी product like Apple Mirror, it's a new innovation created by them. Okay, let's move ahead with the next expansion strategy, that will be the diversification. In this strategy we diversify our business to new product. Okay, that will be there are also 4 types: vertical, horizontal, concentric, conglomerate. Okay, in vertical there are also 2 points. First is forward, next is backward. In backward we are going to the Shubhankar, please show the next slide please. Yes, when you see this slide, Shubhankar, you your will see time has ended. yes, yeah, yes, please 2 minutes please. You will see these, there are the stages like raw material, intermediate goods, manufacturing, marketing and trade. When you go beside this manufacturing, intermediate goods में, raw materials में जब आप जाते हैं तो आप backward जाते हैं. Like अमूल दूध पीता है इंडिया,
सर गाय का और भैंस का दूध होता है, अमूल का दूध नहीं। यस पिंकू, आई अंडरस्टैंड दिस, गाय का और भैंस का होता है, उसी से बनाते इमोशन को कंट्रोल करो। अगर अमूल ने बफेलो फार्म्स ओन किए तो इट विल बी गो इन द बैकवर्ड, इन फॉरवर्ड मींस बैकवर्ड वी आर गोइंग टू द सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल सप्लाई करने के चेन में। ओके, इन फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू द फॉरवर्ड चेन्स। अगर अमूल ने एटीएम स्टार्ट कर दिया, सर एनी टाइम मनी सर, नो पिंको, इट्स ऑल टाइम मिल्क। Okay, control. Okay. So Amul started this. Amul started as an all-time milk. Then this will be in the forward situations. Okay. Next strategy will be the horizontal strategy. In this strategy, we are going to do with the byproducts. मतलब मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर उससे रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स में जाते हैं, एक एग्जांपल लेंगे कि टाटा ग्रुप, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा ग्रुप का। टाटा का सॉल्ट है, टाटा का टी है, ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिजनेसेस है। ओके, नेक्स्ट विल बी द कॉन्सेंट्रिक। ओके, concentric business means when we are going to the next business which are related to our existing business. Like हम फिर से अमूल के एग्जांपल में जाएंगे कि अमूल ने क्या किया। अमूल मिल्क प्रोडक्ट में पहले से था, तो उसने बटर बनाना चालू कर दिया, आइसक्रीम बनाना चालू कर दिया, चीज बनाना चालू कर दिया, तो इट विल बी इन द कॉन्सेंट्रिक। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट का सिंपल है, आपके पिछले बिजनेस का नेक्स्ट बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता है। आईटीसी का सुट्टा और आईटीसी का आशीर्वाद आटा से कोई रिलेशन नहीं है, सुट्टा का बिजनेस का आईटीसी का आटा से कुछ भी रिलेशन नहीं। ओके, नेक्स्ट विल बी द मर्जर एंड एक्विजिशन। देयर आर आल्सो 4 points: vertical, horizontal, concentric and conglomerate. In vertical there are two things, is backward and forward. अगर एक इसका एग्जांपल लेंगे अगर बैकवर्ड का, तो एक टेक्सटाइल कंपनी ने एक कॉटन कॉटन मैन्युफैक्चर कंपनी से टाई अप कर लिया, उसको मर्ज कर लिया, तो इट विल बी द बैकवर्ड। इन फॉरवर्ड, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टेक्सटाइल कंपनी से मर्ज कर लिया, तो इट विल बी द फॉरवर्ड। वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मर्जर। ओके, हॉरिजॉन्टल मर्जर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन ने आइडिया से कहा जियो से बहुत परेशानी, आइडिया ने कहा यार हमें भी बहुत परेशानी है, लेट्स कम टुगेदर एंड हिट द जियो। सो दे कम टुगेदर एंड मेक अ नेक्स्ट कंपनी व्हिच वी विल नो ऑल दैट इट्स अ बिग कंपनी नाउ व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज कोजेनरिक स्ट्रेटजी। एक कोजेनरिक मेजर, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। एक सीएफओ में आप डीटी की प्रैक्टिस करते हो, आईडीटी की प्रैक्टिस करता है, आपने उससे क्या चल साथ में आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स बनाएंगे, इट्स विल बी द कोजेनरिक स्ट्रेटजी। लाइक आपका रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग का स्टोर्स था, बाजू में टीवी का स्टोर्स था, आपने उससे बात की चल साथ में आते हैं काम करते हैं, तो इट्स विल बी द कोजेनरिक। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर्स। यस, इस मर्जर में भी जो कंपनी के साथ हम मर्ज करते हैं उसका हमारे प्रीवियस बिजनेस से कोई ये नहीं होता है, मैच नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज लाइक द कॉन्ग्लोमरेट वर्जन ऑफ टाटा स्काई। टाटा का और स्काई का कुछ कनेक्शन नहीं था, but come with the together for the district connections. Okay, next is strategic alliance. Okay, strategic alliance is like आप किसी के साथ परमानेंट नहीं जुड़ते, पर एक फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप उसके साथ अलायंस करते हैं। इट्स लाइक अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो थोड़े दिन साथ में रहे, फिर वापस होके नेक्स्ट टाइम कोई और था उसे पसंद आ गया, इट्स लाइक दैट। सो इट विल बी लाइक द एग्जांपल्स लाइक द गूगल एंड लॉक्सिटी का। गूगल का अलायंस है लॉक्सिटी के साथ कि वो उससे ग्लास बना के लेगा विद एआई टेक्नोलॉजी, कि उसमें एआई होगा। टाटा का फियाट के साथ टाई अप था। अब फियाट में कुछ दिनों तक उसको फ्लैट ही कहता था, मुझे बाद में पता चला कि वो फियाट था। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेटजी विल बी द रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। सर एक प्रॉब्लम है, व्हाट्स पिंकू सर, मर्जर अलायंस सर के ऊपर से चला गया है सर। Sir, please take care of time. Other speakers also. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके पिंकू, लेट्स अंडरस्टैंड, टाइम बहुत कम है, सुन ले। ओके, मर्जर कैसे होता है? शादी के जैसे होता है। शादी कैसे थी? परमानेंट होती है। शादी करने के लिए भी घर वालों की परमिशन लगती है ना, वैसे ही मर्जर करने के लिए हमें इंसेंटिव परमिशन लगता है, पर अलायंस में ऐसे कुछ नहीं होता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होता है, जब तक साथ में तब चलेगा, जब झगड़ा होकर अलग हो जाएंगे तो इंसेंटिव उसमें भी घर वालों की परमिशन नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, उसमें भी हम टर्न अराउंड करते हैं। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है, लिक्विडेशन स्ट्रेटजी है। टर्न अराउंड के लिए मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, रॉयल एनफील्ड का। उसमें सिद्धार्थ सर है, उन्होंने एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज की थी रॉयल एनफील्ड को ऊपर लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट विल बी डाइवेस्टमेंट। जब हम टर्न अराउंड करते हैं, टर्न अराउंड हम एक
काम में नहीं आता, फिर हम डाइवेस्टमेंट करते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बिग बाजार। बिग बाजार अभी ऐसे हालत में कि उसने अपने जो लॉस मेकिंग यूनिट से उनको बंद कर दिया, और जो प्रॉपर्टी थी वो अभी चल रहे हैं। ओके, लास्ट विल बी द लिक्विडेशन। इट्स द लास्ट सॉल्यूशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपने टर्न अराउंड भी कर लिया, डाइवेस्टमेंट भी कर दिया, फिर भी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो दिस विल बी द लास्ट सिचुएशन। या द एग्जांपल्स लाइक सुभिक्षा स्टोर्स, लाइक किंगफिशर, लाइक जेट एयरवेज। नेक्स्ट लास्ट विल बी द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। जब हम एक बिजनेस के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, इट विल बी द कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। थैंक यू सर। Thank you. Thank you Shubhankar for sharing your screen. Thank you, Harshit. Sorry sir for the time taking, but as a teacher, if you don't interact with these things, so it's really hard to stay students with you. I do agree. What you're Yes, saying sir. is correct. But sir, Yeah. आपने दूसरे टीचर के पेट पे पैर मार दिया ना, पेट पे लात मार दी, उसका पीरियड खा गए आप। Sorry sir for that. प्रॉब्लम हो जाएगा ना। Yes sir. दूसरे Yes sir. टीचर के Sorry पेट पे लात sir. पड़ जाएगी आपके इसमें। Yes sir. Sorry sir. Okay, fine. Thank you. Poonam, are you ready? Yes, sir. Please go ahead. So good evening, sir. Good evening, everyone. Today we have to learn. Today we have to learn losses. How losses can be set off in a current year. How losses can be carried forward, and against which head losses can be set off. My topic is set off and carried forward. Set off and carried forward means adjusting the losses against the profit or income of a particular year. Losses that are not set off against the income in the same year, so we can carry it forward in the subsequent year. As we know, in a total income, there are the 5 heads are there. First is income from salary, second one is income from house property, third one is income from PGBP, fourth one is income from capital gain, and fifth one is income from other source. So first is income from salary. If there is a losses in a salary, there is no chances in losses in salary, so there is no set off and carried forward option is for salary. So second one is losses from the income from house property. If there is a loss in a house property, so firstly we can set our current year losses against house property, which is called as an intra source adjustment. So in this there is a no limits is there. हम कितने भी अमाउंट का लॉसेस यहाँ से सेटअप कर सकते हैं. अगर कुछ भी मतलब लॉसेस हमारा बच गया, तो हम उसे इंटर हेड सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब इंटर हेड मतलब किसी भी अलग हेड से कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एग्जम्पशन है, एक्सेप्शन है, मीन्स सैलरी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 लाख की लिमिट्स दी गई हुई है. अगर फिर भी आपका लॉसेस बच जाते हैं, तो आपको सब्सिक्वेंट ईयर में आप उसे कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए. लेकिन एक्सेप्शन है कि आप सिर्फ 8 सालों में किसी भी साल में अगर आप उसे कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही कर सकते हैं. थर्ड वन इज कैपिटल गेन. in income from capital, there is a two capital gain is there. First one is short term, second was long term capital gain. If there is a loss in a short term capital gain, so we firstly adjust against the current year short term capital gain against the short term capital. We can adjust short term capital loss against the short term capital gain. If still loss is there, so we can go for the long term capital gain. In this case, there is a no inter head adjustment is there. हम किसी भी another head से adjustment नहीं कर सकते, हम सिर्फ long term के साथ ही जा सकते हैं. यहाँ पे भी हमें कैरिड फॉरवर्ड के बेनिफिट्स मिलती हैं. हम इसे 8 साल तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं. और लेकिन अगर हम ये कैरिड फॉरवर्ड करते हैं, तो भी हमारे लिए कोई अनदर हेड्स नहीं बचता. हम सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं. और सेकेंड वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. अगर हमारा लॉस होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो हम उसे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल को गेन नहीं कर सकते. और यहाँ पे भी हमें लॉन्ग टर्म कैरिड फॉरवर्ड की बेनिफिट्स मिलती है. हम इसे 8 साल तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर सकते हैं. यहाँ पे भी हमें इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हम किसी भी अनदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते. ना ही हम हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, ना ही हम पीजीबीपी से कर सकते हैं, ना ही हम अदर सोर्स से कर सकते हैं. तो फोर्थ वन इज अदर सोर्स. अगर हमारे पास लॉसेस होते हैं अदर सोर्स में, तो जो करंट ईयर का लॉसेस है, पहले हम उससे अदर सोर्स से ही मतलब एडजस्ट कर सकते हैं.
उसके बाद भी अगर बचता है तो हम किसी भी हेड से कर सकते हैं, मतलब इंटर हेड से भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम सैलरी का भी यूज करते हैं। तो ऐसा होता है कि हम सबसे पहले कोई भी अगर रहता है तो हम यहाँ पे मतलब सैलरी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कैरिड फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो मतलब हम कभी तो जो भी अगर हमारा कुछ भी लॉस बच जाता है तो उसे हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं फ्यूचर। फिफ्थ वन इज लॉस मतलब इनकम फ्रॉम पीजीपीपी। इन पीजीपीपी देयर इज मतलब मैनी कंटेंट आर देयर, मतलब नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, साइंटिफिक, वो उसके बाद 35 मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस जो होते हैं उसमें वो। तो अगर हमें लॉस होता है नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में, तो पहला जो करंट ईयर का लॉसेस है वो हम इनकम फ्रॉम पीजीपीबी से मतलब एडजस्ट करेंगे। उसके अंदर हम स्पेक्युलेटिव बिजनेस का भी यूज कर सकते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का भी यूज करते हैं, 35 एडी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद भी हम कैरी मतलब प्लीज एक सेकेंड, हेलो। ओके। उसके बाद भी हम उससे मतलब अगर हमारा फिर भी लॉसेस बच जाता है तो हम इंटर हेड का भी यूज कर सकते हैं। उसमें हम किसी भी हेड के साथ कर सकते हैं, एक्सेप्ट हम सैलरी का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे पीजीपीपी के इनकम में हम सैलरी का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसे भी हम 8 साल तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे कैरिड फॉरवर्ड करते हैं तो भी हम इस पर नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का यूज कर सकते हैं इनकम के। उसके बाद हम स्पेक्युलेटिव इनकम का यूज कर सकते हैं, 35 एडी का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 35 एडी मतलब स्पेसिफाइड इनकम है तो उसे हम सिर्फ स्पेसिफाइड इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई अनदर हेड्स मतलब इंटर हेड्स इधर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। इसे हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, बोलते हैं ना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मतलब बिजनेस होता है, तो इसे हम इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से ही हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई इंटर हेड मतलब कोई भी अनदर हेड्स अवेलेबल नहीं है, मतलब सैलरी नहीं है, कोई अभी हेड्स यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। उसको भी हम 4 साल तक कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर समझ लो हमने कोई भी मतलब गेम खेला, लॉटरी की, गैम्बलिंग किया या कोई अदर्स मतलब बिजनेस किया, उसमें अगर हमें लॉस हो जाता है तो हम उसमें कोई भी सेट ऑफ कर नहीं सकते, हम उसका कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं कर ले जा सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सर। Thank you very much, Poonam. So may I call Aditya now? Yes, sir, there. Please. I want to share my screen. Okay. So is it visible? No, not yet. Yeah, it's visible. Continue, please. Okay. So hello and a very good evening to all of you. I am Aditya Naik and today I've brought you an extremely interesting topic. Let us dive into Caro 2016. Let us reflect, recollect, revisit, revise Caro 2016. And why Caro 2016? Well, there's a very solid reason. And that is, it is extremely essential from the point of view of interviews if you are preparing for one. And ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे टीचर ने बताया, बस आपको आके कन्वे कर दे रहा हूँ. Okay, so going ahead, I would not be discussing para 1 and para 2 of Caro 2016 because we've all learned it in the past. However, I would be covering one aspect of para 2, and that is the applicability of Caro 2016. Now, why applicability specifically? Because भाई इसमें limits है, जहाँ limits है वहाँ याद रखने में trouble है, and जहाँ याद रखने में trouble है वहाँ एक rescuer की जरूरत होती है. And today, unfortunately, the rescuer is me. So, and in the very typical Indian law fashion, Caro 2016 is applicable to all of the companies, including foreign companies, according to Section 242, except a banking company, an insurance company, a Section 8 company, one-person company, and a small company. Along with this, there's one more section, that is private limited companies. अब private limited companies में ना सबको exemption नहीं है, कुछ specific companies. अब भाई जहाँ इसमें फिर से negative language का use किया गया है, so let me help you by converting it into positives. कैसे? So if your private limited company is not a subsidiary or holding of a public company, आपको Caro 2016 applicable नहीं है. अगर आपके reserves and surplus of the company are not more than 1 crore on the balance sheet date, Caro 2016 applicable नहीं है. If your borrowings during the year do not exceed rupees 1 crore, आपको Caro 2016 applicable नहीं है. Let me mention the borrowings are specifically from financial institution or bank. So अगर आप friends, relatives इन सब से लोन लेके बैठे हो और in the future आप plan करना चाहते हो और कारों से बचना चाहते हो, so please do that. However, if तब तक दूसरा report आ जाता, order आ जाता है, so you never know. However, and lastly, अगर आपका revenue 10 crore से कम है, so then
आपको कारा 2016 एप्लीकेबल नहीं है. Now let's dive in directly into para 3 and let me cover the clauses in detail. Well, the first clause, that is the fixed assets clause of the CARA 2016. So यहाँ क्या कहते हैं that the company, the auditor has to check whether the company is maintaining the proper records of the fixed assets, whether the assets have been physically verified at intervals, and if there are any material discrepancies, उसको report करना पड़ेगा. The auditor has to report it. And the auditor also needs to check whether the title deeds of the immovable properties are held in the name of company. अगर नहीं है तो उसके भी details auditor को CARO 2016 के अंडर report करना पड़ेगा. Moving ahead to clause 2 and 3 on a very fast track note. So whether the auditor has to check whether the inventory has been conducted at reasonable intervals by the management, and if there are any material discrepancies noticed, उसको report कर दो. Again, in the clause 3, वो देखते हैं, the auditor has to check if the company has granted loans that are secured or unsecured to other companies, firms, limited liability partnerships. इन सबको अगर किए हैं, so if the company has maintained a register under section 189, and the auditor also needs to check if the terms and conditions of the grant of such loans are not prejudicial to the company's interest. ऐसा भी हो सकता है, right? A company के director के किसी relative को हमने बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, ये नहीं चलेगा. If it is so, the auditor would report it under CARO 2016. The schedule of repayment and repayment of principal and interest should also be checked by the auditor, and the amount, if the amount overdue is for more than 90 days, the reasonable steps for recovery अगर लिए गए हैं of principal of interest, वो भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर नहीं लिए गए तो भी आपको CARO 2016 के अंडर रिपोर्ट करना पड़ेगा. Well, moving ahead, clause 4, 5, and 6. Well, inspect in respect of loans, investments, guarantees, and securities, whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with or not. So what is section 185? It is the section that relates to whom the company can give the loans and cannot give the loans. And section section 185 is the section that deals with whom the company cannot give the loans, and section 186 specifies the limits till which the company can give the loans to specified personnel. Again, coming to clause 5. Your time has ended. Okay. I have a lot to cover though, but still I would cover it in very short. So in the clause 5, as you can read here, acceptance of deposits के आपको rules check करने पड़ेंगे, and if these rules have been complied or not, that you have to check. In clause 6, cost audit के आपको regulations and compliances check करने पड़ेंगे. There's still a lot to cover, I think, but I don't wish to take away the time. I've made a presentation. Sir, I would like to continue later if after all of them are done, if you would allow me. Okay, I'll give you that time. Okay, thank you, sir. Thank you. So now may I call Akash, please? Hi sir, good evening. Hi, good evening. आज का मेरा टॉपिक है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. Tax on any assessee depends upon his residential status under the Act. Taxpayers are classified into 3 broad categories on the basis of residential status. First one is resident and ordinary resident. Second one is resident but not ordinary resident. Third one is non-resident. Next point. First one is residential status on individual. The residential status of an individual is determined on the basis of the period of his stay in India. उसके लिए हमें बेसिक कंडीशन जाननी पड़ेगी. पहली बेसिक कंडीशन है कि he must be present in India for a period of 182 days or more during the previous year. And second one is he must be present in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years immediately preceding the previous year. अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसको रेसिडेंस कहा जा सकता है. लेकिन उस ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको हमें एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ेगी. पहली एडिशनल कंडीशन ये है कि ही इज अ रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 previous year, and second was is he stay in India in the last 7 preceding the relevant previous year in 730 days or more. अगर इन दोनों में से वो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जा सकता है. अगर वो इन दोनों में से कोई भी नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर पाता तो उसे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाता है.
Okay. Second point is HUF. HUF will be resident in India if the control and management of its affair is situated all or partially in India. अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से होता है तो उस एचएफ को रेसिडेंट कहा जा सकता है, लेकिन अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑल आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो उसे नॉन रेसिडेंट कहा जा सकता है. अगर एचएफ में करता बहुत एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है तो उसको आरओआर कहा जा सकता है. अगर नहीं कर पाता तो एचएफ विल बी आरओएनआर. ओके. थर्ड पॉइंट इज फर्म एंड एओपी. फर्म और एओपी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है. अगर वो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो उसको रेसिडेंट कहा जा सकता है, और अगर आउटसाइड इंडिया से हो रहा है तो उसको नॉन रेसिडेंट कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज कंपनी. Company will be resident in India if any previous year it is an Indian company, or उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, नहीं तो उसको नॉन रेसिडेंट कहा जा सकता है. ओके. एंड लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम. ओके. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. नॉन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए income which is received, deemed received, arise or deemed to be arise, and income which arise outside India but control उसका बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया होना चाहिए, वो इनकम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी. और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इनकम रिसीव्ड, डीम्ड रिसीव्ड, अराइज इंडिया में जो होती है वो टैक्सेबल हो जाएगी. That's it. Okay, thank you, my dear friend. Thank you very much. I may call Mr. Vaishnav. Are you there, please? Yes. Please go ahead. Good evening, sir. Good evening. Please continue. So my topic is basics of income tax. As per the Article 246, the Union list entry 83, the government has the right to collect income tax on the income other than agriculture incomes. Now we are going to classify our income in 5 different heads: salary, income from house property, profit and gain from business, capital gains, and income from other sources. After that, we are going. After that, we are going to apply clubbing, and we are going to set off the income. After that, we get the gross total income, the GTI, on which we are. It's not the income on which we are going to apply the tax directly. From that, we are going to deduct the deduction under Chapter 6A, Section 80C to 80U. After that, it will give us the total income. On the total income, we are going to apply the basic tax at applicable rates. The general rate of tax are explained in the Finance Act 2020 as per now. So for the then after that, for the richer persons, the surcharge tax is applicable, is added, and for the persons who has the income lower, the rebate is deducted from it. After deduction of rebate or addition of the surcharge tax, we get health and we subtract a health and education cess, which is 4%, which is compulsory. After it, after the health and education tax, advance taxes and TDS is subtracted from it. After that, the balance remains is called as the tax payable or the tax refundable. As per the income tax is payable
for the every person. So the definition of the person for the income tax is the individuals, the HUFs, the firms, the company, the AOPs, association of persons, BOIs, body of individual, local. The sixth is local authorities like municipal corporations. Seventh is the every article judicial person, for example, SEBI and RBI. And the next point is the rates of taxes. Basic exemption limit for resident individual below age of 60, plus the HUFs, the AGPs, the AOPs, BOIs, and the non-resident individual is 2.5 lakhs. 5% from 2.5 lakhs to 5 lakhs, 20% from 5 lakhs to 10 lakhs, 30% above 10 lakhs. The basic exemption limit for the resident individual above the age of 60 is 3 lakhs, 5% from 3 lakhs to 5 lakhs, 20% from 5 lakhs to 10 lakhs, and 30% from above 10 lakhs. And the basic exemption limit for the resident individual above age of 80 is 5 lakhs. 5% is not applicable. Directly 5 lakhs to 10 lakhs, 20%, and 30% about 10 lakhs. So that's it, sir. Thank you. Okay, thank you. Very well explained. Thank you very much. So may I call Pratiksha now? Yes, sir. Sir, just a second. I'm sharing my screen. It's good. Is it visible, sir? It's visible. Please continue. Start. Okay. Good evening, sir. Okay. I'm presenting on accounting standards. So the first accounting standard is AS1, disclosure of accounting policies. The purpose of accounting standard 1, disclosure of accounting policies, is to promote better understanding of financial statements by requiring disclosure of significant accounting policies in orderly manner. Such disclosures facilitates more meaningful comparison between financial statements of different enterprises for same accounting periods, and this standards applies to all enterprises. The fundamental accounting assumptions. There are 3 fundamental accounting assumptions. First is going concern, second is consistency, and third is accrual. So if these fundamental accounting assumptions are followed, then the disclosure is not required. And if in case these fundamental accounting assumptions are not followed, then the disclosure is required in financial statements. And the example for this is, the first example is inventories. So for disclosure and its valuation of inventories, we are having 2 methods. First is FIFO and second is weighted average method. And second example is cash flow statement. So again, we are having 2 methods for its disclosure and valuation. First is direct method and second is indirect method. So the second AS is As2 valuation of inventories. The accounting treatment for inventories is prescribed in As2 valuation of inventories, which provides guidance for determining the values at which inventories are carried in the financial statements until related revenues are recognized. Measurement of inventories. Inventories should be valued at lower of cost and net realizable value. So for example, item 1, which is having its cost rupees 50,000 and its NRV is rupees 45,000. So we will value this item 1 at rupees 45,000 because it's that is at NRV, because its NRV is lower than its cost. So the third AS is AS3, cash flow statement. Cash flow is an additional information provided to the users of accounts in the form of an statement which reflect the various sources from where cash was generated, that is inflow of cash by an enterprise during the relevant accounting year, and how these inflows were utilized, that is outflow of cash by the enterprise. And this helps the users of accounts
to identify the historical changes in the flow of cash and cash equivalents. The second is to determine the future requirement of cash and cash equivalent. And the third is to assess the ability to generate cash and cash equivalents. So there are three types of cash flows. First is operating activities, second is investing activities, and third is financing activities. So some examples relating to these activities are as follows. The first is operating activities, and examples are cash sales, cash receipts from cash receipt from trade receivables, cash paid to suppliers, wages and salaries paid, etc. Second is investing activities. So for example is purchase of machinery, purchase of investments, proceeds from sale of investments, etc. And the third is financing activities. And the examples are proceeds from issue of equity share capital, proceeds from long-term borrowings, and redemption of preference shares, etc. So the next AS is AS10, property, plant, and equipment. So the objective of AS10 is first, prescribe accounting treatment for PPE. Second is help the users of financial statements to understand information about investment in PPE and change in such investment. The principal issues in accounting of PPE are first is recognition of PPE, second is determination of their carrying amounts, third is depreciation charge, and fourth is impairmental losses to be recognized in relation to them. And definition of property, plant, and equipment. There are two conditions to be satisfied for a tangible item to be called as PPE. So PPE are tangible items in short. So the two conditions are first condition is held for use in production or supply of goods or services, and for rental to others and for administrative purposes. And condition 2 is expected to be used for more than 12 months. AS10 not applicable to biological assets other than bearer plants related to agricultural activity. And second is vesting assets including mineral rights, expenditure on exploration for and extraction of minerals, oil, natural gas, and similar non-regenerative resources. And yeah, that's it. Thank you, sir. Thank you. Very well explained. Thank you very much. Thank you. And I would like everyone to clap for Pratiksha for what she has done since the beginning of the session. So please clap for Pratiksha and her efforts. Thank you. Thank you, sir. So may I call Mr. Amit now? Yes. Sir, am I audible? Yeah, you're audible, please. Sir, I'm sharing my screen. Wait a minute. Pratiksha, can you remove it? Pratiksha? Okay, Amit, you may share your screen. So, hello everyone, good evening. Today I am going to explain the business level strategies of any business which taken by the top level management of any business. So yes, I am going to cover the two major topics of this chapter, which is the Michael Porter's generic strategies, and the second is Michael Porter's 5 forces competitive analysis. So first of all, the Michael Porter's generic strategies. So as you can see on the screen, there are 3 strategies which Michael Porter stated. The first one is a cost leadership strategy, the second one is differentiation strategy, and the third one is focus strategy. The first one is cost leadership strategies. Cost leadership strategy मतलब अपने को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक कॉस्ट को इतना कम कर देना है कि मतलब दूसरे जितने भी प्रोडक्ट बना रहे उससे सबसे अपनी कॉस्ट कम होनी चाहिए और अपने को मार्केट में सर्वाइव करना है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कॉस्ट तो कम करनी है, बट ये करेंगे कैसे? तो these are the 3 ways in which we can achieve the cost leadership. So the first is optimum utilization of resources.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब अपना रिसोर्सेस का पूरा इस्तेमाल करके अपनी कॉस्ट को कम करना है। स्टोरेज कॉस्ट हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो या एक्सेट्रा जितनी भी कॉस्ट हो उसको कम से कम करके अपने प्रोडक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो कम करना है और अल्टीमेटली अपनी प्राइस भी कम करनी है जिससे कि हम मार्केट में सर्वाइव कर सके, कम्पीट कर सके। द सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब अपने को अपना प्रोडक्शन इतना बढ़ा देना है कि मतलब जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए और अल्टीमेटली प्राइस भी कम हो जाए, मतलब मास प्रोडक्शन से अपन कॉस्ट पर यूनिट कम कर सकते हैं। द थर्ड इज इन्वेस्टिंग इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज। अपने को कुछ ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना है जिससे अपन अपने कॉस्ट को कम कर सके और वही अल्टीमेटली अपने प्राइस को कम कर सके और मार्केट में सर्वाइव कर सके। The next generic strategy is differentiation strategy. As you can see on the screen, हरे वाले एप्पल सब अलग है और एक यूनिक एप्पल अपने को दिख रहा है स्क्रीन पे जो कि है रेड वाला। मतलब अपने को अपने बिजनेस में यूनिक कुछ करना है और मतलब अलग से कुछ करना है। द मेजर एग्जांपल ऑफ यूनिकनेस अपन बोले तो आप सभी को सुना है या नहीं पता नहीं, बट एक स्केचर शूज आते हैं जिसने अपना यूनिक कंफर्ट देके अपने मार्केट में खुद को सर्वाइव किया है। अब वन प्लस सभी को पता है, उसने भी अपना एक यूनिक फीचर देख के अपना मतलब सिक्योरिटी देख के आईफोन से आधे भाव में फोन बनाया और मार्केट में सर्वाइव किया। आगे अपन देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन 3 बेसिस पे होता है, एक प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट इज बेस डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कुछ मार्केट में जो बन रहा है उससे कुछ अलग प्रोडक्ट बनाओ और मार्केट में सर्वाइव करने का ट्राई करो और compete करो। सेकेंड इज डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मतलब अपनी प्राइस कम करो या ज्यादा करो बट मार्केट से अलग होनी चाहिए, आपके इसमें कुछ यूनिक होना चाहिए और आप सर्वाइव करना चाहिए। द थर्ड इज डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अपना मतलब इसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन आईफोन इतने महंगे फोन बना के भी मार्केट में सर्वाइव करता है, मतलब वो एक डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करता है। उसने ब्रांड का नाम ही इतना बना दिया कि उसके ब्रांड के नाम पे अब सब चलता है। तो नेक्स्ट इज फोकस स्ट्रेटेजी, जिसे नाम में लिखा है फोकस। अपने को एक ही नीश मार्केट पकड़ के, नैरो मार्केट पकड़ के उसको ही टारगेट करना है और वहां पे ही अपना सब सप्लाई करना है। There are two types of focus strategies. The first is focused cost leadership and the second is focused differentiation strategy. Focused cost strategy मतलब competing on the basis of price to target the narrow market. मतलब एक narrow market को पकड़ के वहाँ पे compete करना है on the basis of price, cost कम करते रहो वहाँ पे और एक narrow market को ही target करो. And the second is focused differentiation strategy. Offering unique features that fulfills the demand of narrow market. Same way narrow market को टारगेट करो, उनका डिमांड जो है वो उनकी डिमांड देखो क्या है और उसके हिसाब से कुछ अपना डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वहां पे निकालो, यूनिक प्रोडक्ट वहां पे निकालो और compete करो। अभी मैं वो पूरा जो बोला जेनरिक स्ट्रेटेजीज उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना होगा तो ये डायग्राम से कर सकते हैं। अगर अपना ब्रॉड मार्केट है और लो कॉस्ट प्रोडक्ट है तो अपन कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर अपना ब्रॉड मार्केट है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट और सर्विस है तो अपन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नैरो मार्केट है और लो कॉस्ट प्रोडक्ट है तो अपन फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप लगा सकते हैं और ऑन द अदर हैंड नैरो टारगेट है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो अपन फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। जेनरिक स्ट्रेटेजीज इज ओवर और अभी है पॉर्टर्स 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। माइकल पॉर्टर ने ऐसे कुछ 5 पैरामीटर रखे थे जिसके बेसिस पे अपन कॉम्पिटिटिव मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं और अपन देख सकते हैं कि मतलब अपन ये डिसीजन लेने में अपने को मदद कर सकता है। तो फर्स्ट इज द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, मतलब जो भी नए लोग आ रहे हैं वो अपने को कैसे अपने मतलब मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, उसको उसकी रिस्क अपन कितनी कम कर सकते हैं, उसके बेसिस पे अपन अपने डिसीजंस ले सकते हैं। द सेकंड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थर्ड इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अपने को डिसीजन लेने के लिए वो मार्केट का बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स भी देखना है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई भी देखना है, उसके दोनों के बेसिस पे मिला के अपने को एक डिसीजन लेना है कि अपने को मार्केट में रहना है या नहीं रहना है। द
फोर्थ इज राइवलरी, मतलब एक मार्केट में कितने राइवल से, कितने कॉम्पिटिटर से, और वो कितना अपने बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, ये भी देखना है, और उसके बेसिस पे अपन ने डिसीजंस लेना है। और द फिफ्थ इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, अपन जो मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, अपन जो मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, ज्यादा सब्स्टिट्यूट तो नहीं है। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो उसकी रिस्क ज्यादा है, मतलब अपने बिजनेस का शेयर कम हो सकता है, तो उसके हिसाब से अपन ने डिसीजन लेने चाहिए। Yes, that is it from my side. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. Very well explained. Sorry. Thank you very much. Now, may I call Urvi? Urvi, are you there, please? Yes, sir. Please go ahead. Okay. Good evening, everyone. My name is Survi Gutka. My topic is auditing. So first we start with the definition of auditing. An audit is an independent examination of a financial statement, whether profit oriented or not, and irrespective of its size and legal form, where an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. So analyzation of a definition is. Am I audible? Yes, you're audible. Please continue. Okay. Analyzation of definition is the audit is an independent examination of financial statement of any entity, whether it is profit oriented means the company main aim is to profit, and non profit oriented means the main aim of the company is not profit. For profit oriented example, audit of an listed company which is engaged in business. An example of a non profit oriented company is NGO, whether it is size, whether of its any size or legal form, whether it is a small entity or a big entity, and the objective of an audit is to express an opinion that is true and fair view of the financial statement. So we understood what is an auditing, but the person who is conducting an auditing is an auditor. So first the auditor has to ensure that the financial statement is does not mislead anybody. So this can be done by satisfying himself by doing the further activity. He has to check whether the accounts have been drawn up with the entries in the books of account. The entries in the books of account has a proper evidence that the entry in the books of account have a proper evidence that it has been the invoice has been there or everything. None of the entry has been omitted, or the entry which has not been in the books have been entered. The financial statement are properly classified and described with the accounting standards. The statement of account present a true and fair opinion on a financial statement of the company. So now the objective of an audit, as per the Essay 200, and overall objective of an independent auditor in conducting the audit of a financial statement. First, the auditor has a reasonable assurance that the financial statement do not have that the financial statement are free from material misstatement, and the report on the financial statement and communicate as required in essay that is standard auditing in accordance with the auditor finding. Thank you. Thank you. Very well explained. Thank you very much. May I call Ritika? Yes, sir. Sir, I'd like to present my screen. So may I? Yes, sure. Please go ahead. Okay, so is the screen visible? Yes, visible. So the topic that I'd like to explain today is residence and the scope of total income. So when it comes to Indian citizens, or when it comes to the income tax law, the SSC is categorized into three segments. That is, either he's a resident, or he's deemed to be a resident, or a non-resident. To be deemed to be if he is deemed to be a resident, he has to fulfill certain conditions. But before that, let's see how can he be classified as a resident or a non-resident.
he can be classified as a resident or a non-resident based on certain basic conditions. For the first one is if the assessee is in India in the previous year is 2021 and 22. So if he is in India for 182 days or more in 2021 and 22, then he will be considered as a resident. Or he has to be in India in the PY for 60 days or more. That is, in 21 and 22, he has to be there for 60 days or more, and he has to be there in India for 365 days or more in the last 4 years preceding the relevant PY. So the last 4 years before 2021 and 22, he needs to be in India for 365 days. And if he fulfills any one of these conditions, then he will be considered as a resident. And if he fulfills any, if he does not fulfill any of the above conditions, then he is a non-resident. So now there is an exception to this condition, which is if he is an Indian citizen or a person of Indian origin visiting India, then we will not consider this condition. He has to be in India for 182 days or more. If he is in India for 182 days or more, then he is a resident in this condition. But if he is not in India for 182 days or more, then he is a non-resident. But again, there is again an exception to this. If this Indian citizen or a person of Indian origin, so person of Indian origin is anyone who is born in India, whose parents, an assessee who is born in undivided India, or his parents are born in undivided India, or his grandparents are born in undivided India, then he is said to be a person of Indian origin. So if these people are visiting India, then they would be, this condition is not applicable. But again, if they earn an Indian income of more than 15 lakhs, then this condition will be applicable. The only change will be that we will consider 120 days instead of 60 days. So the condition will become in India for 120 days or more and 365 days or more in 4 years preceding the relevant PY. Again, an exception where we won't consider this condition is that he is an Indian citizen leaving India for employment. And the third exception is that he is an Indian citizen who is a crew member of an Indian ship and not a foreign ship. Again, after we have classified an assessee into resident and non-resident, we can also classify them further as ordinarily resident and not ordinarily resident. This classification can be done based on additional conditions. So the additional conditions are he should be a resident in India for resident in 2 out of 10 years immediately preceding the relevant PY. So and he has been in India for a period of 730 days or more during 7 years immediately preceding the relevant PY. If he fulfills both these additional conditions, then only he will become an ROR. And if he does not fulfill any of these conditions, or if he fulfills only one condition, then he will be an RNOR. Now, coming to residential status of an HUF, we take 2 conditions. First is control and management of the HUF. If it is wholly or partly in India, then the HUF is said to be a resident. And if it is wholly outside India, then it is a non-resident. And further, if the HUF is a resident, then we look at the residential status of Karta. If Karta satisfies both additional conditions, then the HUF is considered to be an ROR. If he doesn't fulfill any of the additional conditions or fulfills only one additional condition, then he is said to be an RNOR. The HUF is said to be RNOR. Then a residential status of a company. Company can be foreign company and Indian company. If it is an Indian company, then we'll consider the Indian company as resident always. And if it is a foreign company, then we look at the place of effective management. If the place of effective management is in India, then it is then the company is a resident. But if it is outside India, then it is a non-resident. And when it comes to a firm, LLP, AOP, or BOI, firm is a partnership firm, LLP is a limited liability partnership, AOP is
AOP is association of persons and BOI is body of individuals. So if now we look at only control and management. So if it is partly or wholly in India, then we can say that a firm LLP, AOP or BOI is resident. And if it is wholly outside India, then it is a non-resident. Now, when it comes to scope of income, Indian income will be taxable for ROR, RNOR and NR, that is for all three of them. But foreign income will be taxable only to ROR and RNOR when the profession or business is set up in India, and it will be only taxable to ROR if if the business controlled or the profession setup is outside India, and every other global income, that is foreign income, will be taxable only to ROR and won't be taxable to RNOR and NR. So that's it. Thank you, guys. Thank you. Very well explained. Thank you very much. Okay. Now, may I call Mr. Abha? Abha Deshpande ji, aap ho yahan par? Yes, sir. Sorry, it's Miss. I'm sorry. Extremely sorry. Okay, so good evening, everyone. Good evening. So I have chosen the topic international capital movements, and it's in economics. So basically, there are like four types of foreign capital. There is like foreign grants and aid. Then there is investment. So that includes like FDI and FPI. Then there is borrowings, and there's deposits from NRIs, that is non-resident Indians. So some examples of borrowings also include like soft loans or loans from like international institutions. So what are soft loans? So soft loans are the loans which are like available at a concessional rate. So now talking about FDI. So what is foreign direct investment? So FDI, it's basically a process where so a resident of home country, he will acquire ownership in the asset of the host country. And it also, so it includes like control, management and ownership of the asset in the host country. So when do you say that an investment is a foreign direct investment? So when NRIs, they acquire at least 10% of like the voting rights or ordinary shares in public or private enterprise. So that is when you call an investment a foreign direct investment. Now talking about the components of FDI. So there are three main components of FDI. So there is equity, there is intra-company loans, and there's reinvested earnings. So like what is reinvested earnings? So reinvested earnings are basically the shares of so these are like the investors' share in the earnings which have not been like distributed as dividend. And talking about the FDI investors, who are FDI investors, so these can include like individuals or associations or government agencies, trusts, or even like unincorporated private or public enterprises, or even like combination of some of these. So there are also certain sectors which are not allowed for FDI in India. So these include lottery, then there is like gambling, there is Nidhi company, chit funds, then manufacturing in like cigarettes, cigars, tobacco products, and real estate business. So I also mentioned chit funds. So what are chit funds? It's basically like a rotating savings scheme, and it's an excellent financial instrument for saving and borrowing. So as a saving instrument, it gives good return on investment, and as a borrowing instrument, it is a reliable source of fund for like during emergencies. Also talking about FDI. So FDI, it includes like real investment. So it's like investment in land or factories or machinery. So there is like ownership and management of asset on the part of the investor. And also FDI, it is a long-term investment. So there's a long-term relationship between the investor and the enterprise, and the investor has certain influence on the decision-making of the company in case of FDI. And also there are certain factors outside, like in the host country, which discourage
like the foreign inflows. So these can include like illiteracy, corruption, inflation, and more. Now talking about FPI, so foreign portfolio investment. So now compared to FDI, FPIs, they are like short-term in nature, and the intention of the investor is not to like control or manage or even like exercise voting powers in the company, but it is to just like earn remuneration on their investments in the finance like in financial securities which they have invested in. And also compared to FDIs, FDI are more like speculative in nature. And yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you very much. So may I call upon now Ms. Preeti? Are you there? Yes, sir. Ms. Preeti, are you there, please? Yes, sir. Hello. Hello. Yes, please. Good evening, sir. Good evening. My topic is basic concept of income tax law. The taxes are considered to the cost of living in a society. There are two types of taxes: direct tax or indirect tax. And direct tax is levied on the income of wealth of the person, the income or wealth of the person. For example, income tax. Indirect tax is levied directly goods and services. The example of income tax: GST or custom duty. Then power of levy taxes. Constitution of India gives power to levy and collect tax, whether direct or indirect, to the central and state government. Then overview of income tax law in India. Components of income tax law: Income Tax Act, Annual Finance Act, income tax rules, circulars or notification, legal decision of government. Legal decision of court. The Income Tax Act, first Income Tax Act 1961, it extends to whole of India. It came into force of 1st April 1962. It contains section 1 to 298 and schedule 1 to 40. Then a section maybe have subsection or clause or subclause. Second, the Finance Act. Every year, Finance Minister of the Government of India introduce the finance bill in the Parliament's budget session. Will be passes to both the houses. Then both the houses of the Parliament get assent of the President. Then it will become the Finance Act. Income Tax Rules 1962. The administrator of direct taxes is looked after by the Central Board of Direct Taxes. Fourth, circular and notification. Circulars are issued by the CBDT from time to time, deal with the certain specific problems and to clarify doubt regarding the scope and meaning of certain provision of the Act. Notification are issued by the central government to give effect to the provision of the Act. Now, there are two types of income: regular income and casual income. Regular income, periodic monetary return. For example, income, salary. Casual income, it does not arise regularly. For example of casual income, winning from lotteries. Methods of accounting: assessee can maintain books on cash system or mercantile system. Then second, in cash system, expenses are recorded on payment basis and income receipt basis. Two types of receipt: revenue receipt and capital receipt. A revenue receipt, recurring receipt, and capital receipt is a one-time receipt. In definition of person,
are included in 8% individual, HUF, AOP, BOI. AOP means associate of person, BOP, body of individual, local authority, and artificial juridical person. Then average rate of tax is the formula is total tax divided by total income into 100. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, Preeti. Now we call for Mr. Raj. Raj, are you there? Raj, are you there? Shivankar? Yes, I am here. I am sharing the screen. Okay. Can you see the screen? Yes, it's visible. Please continue. Good evening, everyone. I am Shubhankar Prabhune, and my topic for today is ratio analysis. So what exactly is ratio analysis? It is a tool of analysis for a company or an investor, which eventually helps them in decision making. Now let's see the significance of ratio analysis. It helps us to simplify the financial data. Ratios help us to determine the trends and future of the company. Ratios point out the weak spots lying in the company, which gives a direction to the management where they can look into. Ratios create benchmarks for comparisons. For investors, they can compare the ratios of the companies to determine whether they should invest in particular companies or not. Also, from the perspective of management, it helps them to analyze the company's performance as compared to the market trends. These are the types of ratios. These are basically the 5 categories in which the ratios are divided into, and we'll look into them one by one. So the first one is long-term solvency ratios. These ratios are used to see the company's sustainability and solvency over a longer tenure. On the right-hand side, you can see the 3 important ratios which fall under this category. Debt equity ratio checks on what type of financing the company is relying more. Debt to total asset checks whether the company's assets are enough to pay back the borrowed funds, and the proprietary ratio determines how much percentage of total assets are available to be distributed to the shareholders. Next is short-term solvency ratios. These ratios are used to determine the company's financial positions in short term, usually the period of 12 months. They consider short-term assets and liabilities into calculation. I'll not go deeper into the formulas due to time constraints, but you can have a look. They are on the screen. So the next is profitability ratios. These ratios, as the name suggests, measure the profitability of the business. These ratios are mainly used by the management to evaluate their performance over the years. These ratios include the evaluation of gross profit, net profit, operating expenses in percentage terms of sales. There are other ratios in it as well, like returns on investment, return on equity, return on assets, etc. Jumping to the next point, turnover ratios. These ratios evaluate the turnaround cycle or the time taken. Like in stock turnover ratio, we calculate that how many times does the existing inventories turn around or sold in that particular year. With the same logic, we calculate the debtors turnover ratio and creditors turnover ratio, but there the benchmarks are different. There we take credit sales and purchases in the respective cases. The asset turnover ratio calculates the how many times of the assets the sales are generated by the business. And with the same logic, we calculate the capital turnover ratio and working capital turnover ratio. Last type we are going to see today is investment valuation ratios. Mainly 2 ratios I'll be talking about, that is earning per share ratio and price earning ratio. These are the ratios mainly used by the investors to
analyze whether they should invest in that company at that point of time or not. Lastly, to conclude, I would say that ratios are vastly divided into these 5 categories, but they are not restricted to them. Different industries may use different set of ratios, and the ratios solely do not describe the whole big picture of the company. There are many other aspects to the growth and future of the company. And lastly, no ratio results can be said to be small or big enough unless they are compared to the respective industry standards or trends. That's it from my side. Thank you so much. Thank you very much, my dear friend, for a nice presentation. Okay, this is the last call for Mr. Raj. Are you there, please? Raj, are you there? Am I audible, please? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. You are audible. Yes. So is Raj there? He's present or he has moved out? I'm seeing 51 people over here. So are there some people who have just logged in with 2 IDs, please? 2 gadgets पे login किया है किसी ने? No, sir. Okay, fine. So this is the final call for Mr. Raj. If you're there, please come up with your presentation, or we'll stop the presentation part that's there. So are you there?